All right. So in the last class, we were done with enzymes. Today, what we are going to start off with are biological molecules. Biological molecules के साथ साथ हम क्या करेंगे? We're going to combine another chapter along with it that in our syllabus exists as human nutrition. All right. तो human nutrition हमारे पास है and we are going to combine it with this so that we can so we can take this particular topic as what we call as nutrition in mammals, right? So we are going to just थोड़ा सा हम syllabus से हटेंगे and we're going to combine two topics and name this nutrition in mammals, right? So now, whenever we talk about nutrition in mammals, what we are basically talking about is कि भाई हमारे पास all the compounds that we need to carry out normal biological processes, right? For example, normal biological process का मतलब क्या हुआ कि भाई all the chemical reactions that are going on inside of me, the growth, right? The let's say the normal strengthening of the body, for example, the strengthening of the bones, strengthening of the muscles, राइट? तो ये सारे हमारे पास जो प्रोसेसेस है उनके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. वी कैन डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, वी कैन इवन डिफाइन न्यूट्रिएंट्स भी. वी कैन से इन मैमल्स हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आर दोज सब्सटेंसेस दैट गिव अस एनर्जी एट द सेम टाइम they are required for the physical and the mental well-being. फिजिकल और मेंटल वेलबींग का मतलब क्या हुआ कि भाई इट अलाउज द नॉर्मल मेंटल एंड द फिजिकल फंक्शन टू अकर. एक छोटी सी मिसाल लेते हैं. लेट्स से भाई आई हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड by an organism, but what I don't have is vitamin D, right? So what's going to happen is I'm going to suffer from a disease that we call as rickets. If I would be a child and if I would be an adult, I would be suffering from osteoporosis. एक जगह मेरी हड्डियां बेंड हो रही होंगी, एक जगह मेरे पास हड्डियां टूट रही होंगी. So the point is it's nutrients, not all the nutrients or the function of the nutrients is not only to provide us with energy. राइट? फिजिकल वेलबींग से मतलब क्या हुआ कि भाई बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस है ना, सब क्या हो, दे वर्क वेरी एफिशिएंटली, right? Now, whenever we talk about nutrients, we have about seven, if I'm not wrong, classes of nutrients, right? सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, right? Carbohydrates के अलावा the other class that I have are called as fats and lipids. दोनों सेम है, बस बहुत minor difference है state के अंदर. That's why we're giving them two different names. The third nutrients are called as proteins. The fourth are polynucleotides. ऐसा polynucleotides को we are not going to discuss them in this chapter. जब हम लोग inheritance पढ़ेंगे या genetics पढ़ेंगे continuity of life के अंदर, वहाँ we'll discuss polynucleotides in detail because it would make much more sense there. Now, the next, let's say, group are vitamins. फिर हमारे पास आ जाता है फाइबर, राइट? चलो विटामिन से पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, विटामिन के बाद रादर वी विल टॉक अबाउट द मिनरल आयंस, राइट? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट mineral ions. There are some mineral ions that we need to know about, and then we'll talk about fiber. और थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? वाटर के बारे में. Now the first thing that before we talk about each of them separately, इतना बड़ा chapter नहीं है, आसान सा chapter है ये. You don't have to talk about everything in a lot of detail. अच्छा, the very first thing that I'm supposed to know about all, or rather the first four or the first five of these nutrients is that they are all कौन से वाले molecules?
they are all organic molecules. Now, what do we mean by organic molecules? You'll study organic chemistry later this year. So, what is organic chemistry? It's basically the chemistry of hydrocarbons. Now, so if I'm saying be a particular substance says or a particular substances are biological molecules, that means that they are all of them are hydrocarbons. Now, the question is, sir, what are hydrocarbons? Now, hydrocarbons are compounds that are majorly made up of carbon and hydrogen. उनके अंदर देखो why majorly usual definition जो chemistry वाले देते हैं वो कहते हैं भाई compounds made up of carbon and hydrogen. Now that is not entirely true. Why? Because they can have other compounds as well. हाँ, ज्यादा content उनके अंदर किसका होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का होता है कंपेरेटिवली. यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, एक छोटा सा सवाल है. When this is something that usually teach my students when I teach them organic chemistry. केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है, राइट? इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट वो सब्जेक्ट फ्रॉम बायोलॉजी. उसके अंदर हम लोग कौन सी वाली केमिस्ट्री पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो द वर्ड ऑर्गेनिक बेसिकली रिलेट्स टू ऑर्गेनिजम्स. तो केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिजम्स कहाँ है? हैज एनीवन हियर इन स्कूल और एनीवेयर एल्स हैव दे स्टडीड अ बिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? या अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी ने भी शुरू नहीं करी? गाइस, ओके. आयशा, चलो नो क्लास. अच्छा, आयशा हैज. आयशा, व्हाट डू वी, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चीज की केमिस्ट्री है? मतलब व्हाट इज द सब्सटेंस दैट यू टॉक अबाउट इन इट? शुरू के अंदर हम लोग करते हैं ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. एक जमीन से वी टेक आउट समथिंग एंड वी कैरी आउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन and we get compounds like alkanes and alkenes and alcohols from it. What is that particular compound? What is that oil? क्रूड ऑयल. वेरी गुड. सो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तुम लोग पढ़ोगे ना, if you haven't done it yet, so it's basically you'll start off with crude oil क्योंकि all the organic compounds, alkanes, alkenes, carboxylic acids, alcohols are very easy compounds, don't worry about them. uh, they are extracted from crude oil. Now whenever we talk about crude oil is a fossil fuel, right? Can someone tell me what are fossils? Dead animal and plants, right? तो अब देखो dead animal जो organisms, like let's talk about dinosaurs. uh, those organisms who died millions of years ago and are continue dying from that period of time, when they are buried under the ground, they compress so much that they are converted into a fossil fuel such as crude oil. Now when you take out substances from crude oil, right, alkanes, alkenes वगैरह, वो they become a part of organic chemistry. Why? Because ultimately all those compounds are coming from an organism that died a million years ago. इसलिए हम क्या कहते हैं? उसको organic chemistry कहते हैं. And again, जैसे मैंने बताया था, organic chemistry is a chemistry of hydrocarbons. अब वो सारे जो compounds जो एक organism के अंदर होंगे, भाई वो भी तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए होंगे. जब भी तो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन इतना है. That's why we are calling all of these compounds as organic compounds, because these compounds are found or initially or will always be found in organisms. ठीक है? अब क्योंकि हमारे पास organic molecules जो होते हैं ना, वो किसके बने हुए हैं? They're made up of hydrogen, carbon. उसके अलावा एक और element होता है oxygen. तो we are not concerned about vitamins at the moment. लेकिन जो शुरू के चार हमारे पास nutrients है ना, उनके अंदर chemical elements कौन कौन से होंगे? केमिकल एलिमेंट्स का मतलब कि फॉर वी हैव द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, राइट? तो वो एलिमेंट्स, ये वो सब सब्सटेंसेस जो हमारे पास ऑर्गेनिक वो पीरियोडिक टेबल के अंदर होंगे, राइट, दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स. अब व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट आर मेकिंग अप these substances? All of them contain three chemical elements, which are carbon, hydrogen and oxygen. अब examiner would ask you this in the exam कि भाई name, list down the elements or list one element that is found in fats or lipids, right? Any one of carbon, hydrogen, oxygen.
अच्छा, अब होता क्या है, प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, उनके अंदर एक एडिशनल एलिमेंट होता है। वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, उनके पास एक और एलिमेंट होता है, फॉस्फोरस। राइट। तो अब अगर हम लोग देखें ना, तो हम लोग अच्छा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर योर डीएनए एंड आरएनए। विल टॉक अबाउट देम लेटर ऑन, वी डोंट नीड टू राइट नाउ। बट पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर डीएनए एंड आरएनए। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, दे ऑल कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सॉरी, ऑक्सीजन, अस्तगफुरुल्लाह। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाँ, प्रोटीन्स एंड polynucleotides, they contain nitrogen. Polynucleotides, besides carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen, they also contain phosphorus. Now, why am I teaching you this? Because a question may come in your exam that would say, okay, give the exam, or give or write down uh, an element present in both carbohydrates and proteins. तुमने बता दिया भाई, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के अंदर दोनों में हाइड्रोजन है, right? Then the examiner is going to ask you, name an element that is present in proteins but will not be found in the carbohydrates. तुमने बता दिया, okay sir, nitrogen. Nitrogen is present in proteins but it's absent in the carbohydrates. Then the examiner may also ask you, name an element present in the polynucleotides that is absent in the proteins. Phosphorus. Do we get this? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो बस इतनी छोटी सी बात थी, बस इससे आगे हम लोग ना इनके बारे में अभी फिलहाल के एलिमेंट्स के बारे में और हमें बात नहीं करनी। When we were in school, how did we learn this? We learned it by cho cho chon chomp. Right? This is how we learned. It made sense. So you know that funny let's say rhythm that we created, like it was like cho cho chon chomp, right? So this is the thing. There's something that you have to learn. खैर, अच्छा जी, moving on. The first biological molecule that we'll talk about are the carbohydrates. अच्छा, अब एक और चीज, I'm sorry. एक और बात याद रखिएगा, हमारे पास इस शुरू के चार न्यूट्रिएंट्स है ना, जो हम लोगों ने लिखे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, दे आर ऑल पॉलीमर्स. सो I'll introduce you to this word. So this word is a polymer. पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी. Polymers are those structures or those molecules which are made up of smaller molecules, right? Let's take an example. Let's take an example. Uh, we have a wall, right? So हमारे पास एक दीवार है. So that wall, that single wall, is a single large structure. So I'm going to call that wall, or I'm going to consider that wall as a polymer. But did that wall just come into being? नहीं. But for example, let's say if I were building a house, will the construction crew just get a ready-made wall? नहीं. What would they get? Are bricks. So the bricks are single units. When many bricks are going to join up together, they're going to give you a single wall, right? इसी तरीके से बेटे, हमारे पास जो bricks है ना, they are considered to be monomers, a single unit. When many monomers, mono का मतलब एक होता है ना. If I would start speaking in only one voice like this, without any expressions, without anything, you would say, sir, you've gone very monotonous, monotone, एक tone, right? तो मोनोमर क्या होता है? मर इज अ सब यूनिट. मोनो का मतलब एक सब यूनिट से बना हुआ है भाई, वो सिंगल यूनिट. व्हेन मेनी मोनोमर्स जॉइन अप टुगेदर, दे गिव राइज टू अ सिंगल पॉलीमर. एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत सारे पॉलीमर मोनोमर से बना हुआ है. तो भाई मेरे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी पॉलीमर है, फैट्स, लिपिड्स भी पॉलीमर है, प्रोटीन्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के तो नाम के अंदर ही आ रहा है कि भाई दे आर पॉलीमर्स, राइट? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? डू वी गेट दिस?
एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? ऑल राइट। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, दे आर व्हाट वी कॉल और द व्हाट वी कॉल एज शुगर्स। जो हमारे पास शुगर्स होती है ना, दे आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। शुगर को हम लोग लैटिन के अंदर क्या बोलते हैं? शुगर को हम लोग लैटिन के अंदर क्या बोलते हैं? शुगर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज, और तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि भाई शुगर्स है। Sugars are basically called as saccharides. All right. Now, what are saccharides? Again, saccharide का मतलब ही क्या होता है? शुगर। ठीक है। अब देखो अगेन वही वाली बात कि हमारे पास ये सैकराइड्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? शुगर्स है। अब एंड अगेन देर a part of carbohydrates, so they're going to be, you know, carbohydrates or let's say polymers. अब अगर मेरे पास कार्बोहाइड्रेट का एक मोनोमर होगा, if I'm going to have a monomer of the carbohydrate, what am I going to call it? ठीक है, I'm going to call it a monosaccharide. अगर मेरे पास कार्बोहाइड्रेट का एक पॉलीमर होगा तो मैं उससे क्या कहूंगा? I'm going to call it a monosaccharide. ठीक है जी। Similarly, if I would join two monomers together, if I'm going to join two monomers together, what am I going to get? Mono plus mono gives you a dimer. And if I'm going to join up many monomers or many dimers together, I'm going to get a polymer. अब मुझे क्या करना है? मुझे specify करना है कि okay, you know, these monomers, these dimers and these polymers that I'm talking about, I'm not talking about the polymers of fats or the proteins, I'm talking about the polymers of the carbohydrates, right? तो अब मैंने उसको बोल दिया कि अच्छा भाई, I have a monosaccharides saccharide. When two monosaccharides join up together, they give rise to a disaccharide. When many mono or disaccharide join up together, they give rise to a polysaccharide. तो इससे मुझे पता क्या लग रहा है? देखो, just the name is giving me information about two things. कि number one, कि am I talking about a polymer, a monomer, or a dimer? Number two, to which nutrient does this mono, di, or polymer belong? For example, if I'm going to say कि I have a disaccharide, that this would tell you कि okay, I have a dimer of what? Of carbohydrate. If I would say I have a polypeptide, this would mean that I have a polymer of proteins. If I'm going to say I have a mono, let's say nucleotide, a monomer of a nucleotide, right? If I have a polyester, monomer of, sorry, polymer of fats and lipids. तो जो सेकंड वाला नाम होता है ना, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये मुझे बता रहा होता है कौन सी क्लास से ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड, ये वाला पर्टिकुलर मोनोडाई और पॉलीमर बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अब एक और चीज होती है। अब नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। द carbohydrates, or let's say the monosaccharides. To make monosaccharides, there are two conditions. To make monosaccharides, there are two conditions. The first condition is that a monosaccharide should have a minimum of 3 carbons and the maximum of 7 carbons. This is condition number one. This is condition number one. और दूसरी बात, अब now what are the elements? Carbon, hydrogen, oxygen, right? The second condition is that to have a monosaccharide, to make a monosaccharide, right? The second condition is that all the carbon, hydrogen, and the oxygen sh- uh, should fall into the formula, which is CnH2ON, right? केमिस्ट्री कैसे आ गई है ना? अच्छा जी, अब देखो,
अब एक चीज देखिए, अब होता क्या है कि एन जो है ना वो नंबर ऑफ कार्बन्स बता रहा है हमें, ठीक है। अच्छा, नाउ नाउ if we would have the first monosaccharide, let's say if we would have the first monosaccharide, right, a monosaccharide that contains 3 carbons, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, या उसे हम लोग कहेंगे क्या? All those monosaccharides that contain 6 carbons, sorry, 3 carbons, they are called as कौन सी वाली sugars? Triose sugars. They are called as triose sugars. ठीक है? Similarly, all those monosaccharides that contain 4 carbons, they are called as tetrose, right? Similarly, those that contain 5 carbons are pentose. Those that contain 6 carbons are hexose. ठीक है? Don't worry if it's not making sense right now. It will. Don't worry about it. Now, अब अगर हम लोग इनका फॉर्मूला लिखें, ट्रायोस शुगर्स में कितने कार्बन होंगे? 3। तो हम लोग एन की जगह क्या लगा देंगे? 3। अब फॉर्मूला क्या बन गया? हाइड्रोजन ट्वाइस है ना, तो 2 3s are 6। ऑक्सीजन 1 है, 1 3s are 3, राइट? तो मेरे पास जितनी भी शुगर्स होंगी, जिनके पास 3 कार्बन होंगे, उनका बाकी का फॉर्मूला भी यही होगा, C3H6O3, राइट? अच्छा, those sugars which are considered to be tetro sugars, they contain 4 carbons. They contain 4 carbons. All right. Now, अब मेरे पास n की जगह क्या आ गया? 4। सो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? h कितना है मेरे पास? 2 है ना, राइट? सॉरी, तो 2 4 कितना हो गया? 8। ऑक्सीजन 1 है, 1 4 4। तो जितने भी हमारे पास टेट्रो शुगर्स होंगी, उनका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? C4H8O4। ठीक है। Similarly, those sugars which have or which are called as pentose sugars, उनका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? C5। अगर N की जगह हमारे पास 5 आ गया, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों? 10O5। ठीक है जी। एंड हेक्सोस शुगर का फॉर्मूला क्या होगा? कैन समबडी टेल मी द फॉर्मूला फॉर हेक्सोस शुगर्स? हाँ भाई, हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन होता है ना। Sir, वेरी गुड जी बच्चे। 6 carbon, hydrogen 12, वेरी गुड, and C6H12O। oxygen 6. वेरी गुड, तो भाई C6H12O6। ठीक है जी। अच्छा, अब अगेन हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अच्छा भाई, अगर इसने बोला कि अच्छा मेरे पास ये कार्बन है, इसके पास 4 कार्बन, एक कार्बोहाइड्रेट, एक मोनोसेक्राइड, इसके पास 4 कार्बन है, तो हाउ विल आई बी एबल टू फॉर्म द फॉर्मूला? ये एमसीक्यूज के अंदर ये वाला पॉइंट आता है, ठीक है। आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज शुगर्स, the only monosaccharides or the family of monosaccharides that we are concerned with are the hexose sugars. देखो बच्चों, होता क्या है, this is something that your chemistry teacher would teach you later on. There are compounds that we call as isomers. Iso का मतलब होता है सेम, याद है अभी हम लोगों ने आइसोटोनिक करा था, तो iso basically means same. Now what happens is that there are structures called as isomers. What are isomers? They are compounds with the same formula, but they have a different structure. Let me give you an example.
I have a molecule that looks something like this, right? इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? C3 के हाइड्रोजन्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, H8. फिर this molecule can also look like this, right? अभी भी फॉर्मूला क्या है? अगर मैं कार्बन्स काउंट करूं तो कार्बन्स कितने? कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, C3, राइट? सिमिलरली हाइड्रोजन्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो दिस इज द केस। फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों मॉलिक्यूल्स के अलग अलग थे ना। दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। इसी तरीके से बेटे, इसी तरीके से हमारे पास हेक्सो शुगर जो होती है ना, उनके 3 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, 3 डाइसैकेराइड्स होते हैं, और 3 पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, राइट? रूल ऑफ 3। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज कि भाई व्हाट आर द मोनोसैकेराइड्स of the hexose sugars. Why am I calling them monosaccharides of hexose sugars? Why am I, let's say, calling them monosaccharides of hexose sugars? Is because that all of them have the same formula, C6H12O6. कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ग्लूकोस, नंबर 2 फ्रक्टोस, राइट, एंड नंबर 3 गैलेक्टोस, राइट? तो GFG करके याद रखना है। ना 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 ना, we'll come to sucrose बच्चे। So again, if you could just repeat this with me, how many monosaccharides of hexo sugars do we have? 3। कौन कौन से? GFG, glucose, fructose and galactose, right? So it's glucose, fructose and galactose। अब होता क्या है, अगर मैं एक मोनोसैकेराइड से एक और मोनोसैकेराइड ज्वाइन अप करूं, I'm just writing mono here, what will it give me? It will give me a saccharide that I would call as a disaccharide। दो ज्वाइन अप हो रहे हैं ना, ठीक है? अच्छा जी, तो भाई मैंने क्या डिसाइड करा, मैं इन तीनों मोनोसैकेराइड से ग्लूकोज को ज्वाइन अप कर दूं, राइट? ग्लूकोज is one thing that joins up with all three of them। Now when you join up a molecule of glucose with another molecule of glucose, the disaccharide that you get is called as maltose। When you join up a molecule of glucose with fructose, the disaccharide that you get is called, now Heba, is called as a sucrose, right? तो देखो जितने भी हमारे पास सैकराइड्स की बात हो रही है ना, आखिर के अंदर ओज आ रहा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। एंड whenever we are going to join up galactose with glucose, the disaccharide that we are going to get would be called as lactose, right? यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ तक कोई मसला? तो एक बार जल्दी से, हाउ मेनी मोनोसैकेराइड्स डू वी हैव? 3। कौन कौन सी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बेटे रिएक्टिव है। there's a structural compatibility। फ्रक्टोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। गैलेक्टोज फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो रिएक्ट नहीं कर सकते। तो ये वाला बच्चा, दैट्स व्हाई विद ग्लूकोज सबका रिएक्ट कर जाता है, उसका स्ट्रक्चर इतना फ्लेक्सिबल है।
खैर, खैर वो एएस में पता चल जाएगा क्यों। अच्छा खैर, कम बैक हियर। सो अगेन, थ्री मोनोसेक्राइड्स कौन कौन सी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोस, राइट? Similarly, now there are three disaccharides, right? So again, when I'm going to join up, अब मुझे जल्दी से इसको पकड़ देके बता दो। When I'm going to join up glucose with glucose, it's going to give me what disaccharide? So glucose with glucose would give you what? Maltose. ठीक है? Similarly, glucose with fructose is going to give you sucrose. Fructose. Very good. And glucose with galactose is going to give you is galactose. So galactose plus glucose is going to give you lactose. ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स? अच्छा, अब एक और चीज देखिएगा प्लीज। अगर हम लोग कहें कि भाई सर, अभी आपने कहा कि all three of them they are hexose sugars, right? The monosaccharides. So that means glucose, fructose, and galactose are going to have the same formula, C6H12O6. So now if we're going to add another monosaccharide of the hexosugars, a glucose, which again has the same formula, C6H12O6. So now when they are going to form the disaccharide, what will be the formula of the disaccharide? Disaccharide का formula क्या होगा? सोचो उसके बारे में। So what would you get when you would add a C6H12O6 into another C6H12O6? So C6 plus C6 कितना हो जाएगा? C12। अब मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर ही बता दो प्लीज। वेरी, हाँ हाँ, ओके। सो अच्छा चलो, so let's go with Hibba's answer first. ठीक है, तो it's going to be C6H24 because 12 plus 12 is 24, right? And oxygen is 6 plus 6, right? तो ये भी कितना हो जाएगा? 12। असूलन तो ऐसे ही होना चाहिए, right? This is how it should be. But there's a small problem. Problem तो नहीं, खैर, there's a small change that we'll see. होता क्या है बेटे? The reaction that these monosaccharides undergo to form a disaccharide is called as condensation. ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस है ना, इससे हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। नाउ कंडेंसेशन, whenever condensation occurs, it also releases a molecule of water. So glucose plus glucose will give you maltose plus water. Fructose plus glucose will give you sucrose plus water. And galactose with glucose would give you lactose and water. अभी तक तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन बड़ी बैलेंस्ड है, राइट? C12 C12, H24 H24, O12 O12, राइट? लेकिन अगर यहाँ मेरे पास वाटर भी रिलीज हुआ तो ये इक्वेशन डिसबैलेंस हो जाएगी। अब इस चीज को देखिए, अगर मुझे वाटर निकालना है या प्रोडक्ट के अंदर वाटर भी आएगा, वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन हैं बेटे? हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर इन वाटर? 2। तो मुझे डाइसैकेराइड से कितने हाइड्रोजन माइनस करने पड़ेंगे? 2।
वाटर के अंदर कितना ऑक्सीजन का एटम है? ओनली वन। तो मुझे डाइसैकेराइड से कितना ऑक्सीजन माइनस करना पड़ेगा? वन। तो क्योंकि डाइसैकेराइड्स आर ऑल्सो रिलीजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, उनका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? C12H22O11, right? It's going to be C12H22O11. Do we get this? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बेटे अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी? If we don't subtract it, how will the equation be balanced? अरे मेरा बच्चा, add, where do you want to add them? I want the number of carbons, hydrogen and oxygen to be the same in the reactants and in the products. मुझे प्रोडक्ट दो बनाना है, डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हाँ बेटे, जितना मोनोसैकेराइड आगे जुड़ता जाएगा ना, उतना एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होते जाएगा मंतशा बेटे। फॉर एग्जांपल 5 मोनोसैकेराइड्स ज्वाइन अप टुगेदर, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज होंगे। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई मसला फॉर्मूला समझने में? एनी प्रॉब्लम सो फार बच्चों? सोच लो उसको एक बार, देख लो उसको एक बार। इफ देयर एनी प्रॉब्लम्स लेट मी नो अभी। ओके, चलो तो आगे चलते हैं। अच्छा भाई, ये तो बात हो गई हमारे पास किस चीज की, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स की। भाई जिस तरीके से हमारे पास तीन मोनो और डाइसैकेराइड्स है ना, राइट, हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं, वी आल्सो हैव पॉलीसैकेराइड्स, राइट। अच्छा अब एक छोटी सी बात बस याद रखिएगा प्लीज, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस। whenever you're adding the monosaccharides together, you're giving it's an anabolic reaction, right? It's called as condensation. It's going to produce a disaccharide and water. But the problem, one of the problems with disaccharide is that whenever you consume them, for example, ये जो maltose है ना, ये malt से निकलता है। malt क्या होता है? wheat products, right? मैंने रोटी खाई तो उसमें क्या होगा? malt होगा, maltose होगा। all right, तो with I cannot absorb maltose, it's too large. Sucrose is found in fruits, और जो हमारे घर की चीनी होती है, it comes from sugar cane that has sucrose in it. Lactose is from milk, right? तो खैर, all three of these disaccharides, they, once I eat them, once I consume them, from the digestive system they will not move into my blood. Why? Is because they're too large, right? It's because they are too large. So what happens is during digestion I will need to break them down. So how will I convert maltose back into two molecules of glucose, or how will I simply convert a disaccharide back into monosaccharide? I'll add water to it. So whenever you add water to a disaccharide or a polysaccharide, this is going to undergo a process called as hydrolysis. The word lysis basically means what? Break down. ये कैटाबॉलिक रिएक्शन, रिमेंबर द एनाबॉलिक एंड द कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो बेटे लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। भाई हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हो गया? ब्रेक डाउन यूजिंग व्हाट? ब्रेक डाउन यूजिंग वाटर। So when you add water to a disaccharide, it will be hydrolyzed back into monosaccharides. So when you're going to break down glucose, or sorry, maltose,
When you're going to hydrolyze maltose, it's going to give you two molecules of glucose. If I'm going to hydrolyze sucrose, it's going to give me a molecule of fructose and glucose. If I'm going to hydrolyze lactose, it's going to give me a molecule of glucose and galactose. तो ये टू वे रिएक्शन है. वाटर रिलीज होगा और डाइसैकेराइड बनेगा तो कंडेंसेशन होगा. डाइसैकेराइड और वाटर ऐड होके दो मोनोसैकेराइड्स बन रहे होंगे, ये हाइड्रोलिसिस होगा. राइट right? तो बस ये चीज थी. Right? This was the difficult part only. Now, one thing we are going to make a side note of it. हम कहते हैं कि भाई all mono and disaccharides are sweet and what? Soluble in water. कि भाई मेरे पास जितने भी डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड है ना, नंबर वन वो स्वीट टेस्टिंग होती है. अच्छा, स्वीट टेस्टिंग का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि ना वो बिल्कुल मीठी हो. ठीक है, हमेशा नहीं, हमेशा ऐसे नहीं कह सकते हम लोग. Sweet tasting basically means something that is pleasant tasting. Up, why am I telling you this? Why am I telling you this? It's because lactose is milk sugar. Now the students would ask me कि सर दूध मीठा तो नहीं होता, right? And I would give them a send reply कि दूध कड़वा भी नहीं होता. Right? It's something that I can easily drink. It's not very bland कि भाई कुछ कोई भी flavor नहीं हो. It has its distinct flavor, and that's because of lactose. क्योंकि उसके अंदर दूसरे सब्सटेंस भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, उसमें कैल्शियम भी होता है, तो वो स्वीटनेस को मास्क कर देते हैं. खैर 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 खैर. अच्छा, बस लेट्स कंप्लीट द कार्बोहाइड्रेट्स राइट नाउ. अच्छा, अब हम लोगों ने क्या देखा, जिस तरीके से भाई हमारे पास मोनोसैकेराइड्स है ना और डाइसैकेराइड्स हैं, उस तरीके से हमारे पास तीन क्या आ जाती हैं. सो थ्री मोनोसैकेराइड्स, थ्री डाइसैकेराइड्स, राइट? रूल ऑफ थ्री. तो द वेरी सेम वे वी ऑल्सो हैव थ्री पॉलीसैकेराइड्स. वी ऑल्सो हैव थ्री पॉलीसैकेराइड्स. सबसे पहले हमारे पास जो पॉलीसैकेराइड, अच्छा, सबसे पहले पॉलीसैकेराइड के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? Number one, these polysaccharides, all three of them are insoluble. Number two, they don't taste sweet. Right? They don't taste sweet. अब हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टार्च. राइट? Starch, where is starch present? Where is starch present? Starch is present only in plants. Now, as a human, I can digest starch, I can consume it, I can break it down, but I cannot make my own starch. अच्छा, plants के अंदर किधर होता है सर? Are there any specific location? Yes. हमें स्टार्च किधर मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. वो ऑर्गेनेल जो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना रहा है. हमें और किधर मिलेगा? इन द रूट्स एंड स्टेम्स में. और तीसरी जगह हमें कहाँ मिलेगा? सीड्स. नाउ द चावल दैट वी ईट, द राइस, द pulses, dal, the corn that we eat, what are we consuming? We're consuming the seeds, right? All the dry fruits that we eat, the walnuts, the almonds, what are we consuming from them? We're consuming the seed. So is it going to give me any carbohydrates? Yes, it would. What carbohydrate would I find in the seeds? Starch, right? Similar to starch, mammals or animals also have a carbohydrate that they can, a polysaccharide that they can make, and it's called as glycogen. Where do you find glycogen? Glycogen is present in animals and fungi. जो फंगस होते हैं ना, उनके पास भी स्टार्च नहीं होता भाई.
वो भी क्या करते हैं, वो ग्लाइकोजन बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, एनिमल्स के अंदर वेयर वुड यू फाइंड ग्लाइकोजन? इन टू प्लेसेस, इन द लिवर एंड इन द skeletal muscles. What are skeletal muscles? Muscles that are present on my skeleton, on my bones. मेरा arm, मैं face move कर रहा हूँ, I'm using my muscles to speak. Voluntary muscles है मेरे. ठीक है. The muscles on my leg, the muscles at the back, right? They're all voluntary muscles on the bones. I can move them whenever I want them. ठीक है. अच्छा, अब एक तीसरा हमारे पास पॉलीसेकेराइड आता है, विच, अच्छा इन दोनों पॉलीसेकेराइड, हाँ अब इन दोनों पॉलीसेकेराइड से काम क्या है, स्टार्च और ग्लाइकोजन का, that they are energy storage. अब देखो एनर्जी स्टोरेज का मतलब क्या हुआ सर, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी स्टोरेज? लेट्स से भाई आई हैड ब्रेकफास्ट एट 6 in the morning. So when I had breakfast, I took in more glucose. For example, I had a bowl of cereal with a lot of sugar a lot of sugar in it, and some tea with, again, with lots of sugar. So when that sugar would be broken down, would be digested, it would give me, ultimately it would give me glucose. Now this would give me a large quantity of glucose, something that I don't want to, lie free in my bloodstream. So all of that glucose in my liver and in my skeletal muscles would be converted into what? Into glycogen. Plants, when they're photosynthesizing, if they're producing any extra glucose, that glucose would be converted and stored as starch. So starch and glycogen are storage molecules basically. Let's say after 6 hours, and let's say since I was working, I was teaching and everything, the amount of glucose in my body, it started to decrease, or the amount of glucose in my blood, it started to decrease because I was continuously using it up. Because I was working my muscles, let's say the rest of the cells, they needed respiration, they needed glucose for respiration. So what happened was, what happened was कि अब ये स्टार्च, ये जो मेरी बॉडी में ग्लाइकोजन होगा ना, it would undergo the process of hydrolysis. As it's undergoing hydrolysis, it would be converted into monosaccharides, and those monosaccharides would be converted into, sorry, those disaccharides would be converted into monosaccharides, and those monosaccharides, for example, glucose, would be used to, let's say, renew, or let's say bring the conditions or bring the amount of glucose that decrease in the blood back to the normal levels, right? तो ये इनका स्टोरेज का काम है, आगे इसकी बात करेंगे हम लोग, डोंट वरी। अच्छा, आ, जो तीसरा पॉलीसेकेराइड है ना, उसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, इट इज नथिंग टू डू विद एनर्जी, उसका स्ट्रक्चरल रोल है। द थर्ड पॉलीसेकेराइड दैट वी हैव is called as cellulose. So can anyone tell me what is cellulose? You know this, I've taught you. Cellulose क्या होता है? Plants में किधर बच्चे? It is in plants, very good. Where in plants? Cell wall, very good. भाई सेल्यूलोस का काम क्या है? सेल्यूलोस एक ही काम कर सकता है, इसका स्ट्रक्चरल रोल है, हमने कहा इट मेक्स प्लांट सेल वॉल। क्या बनाता है भाई ये? प्लांट सेल वॉल बनाता है। इतनी सी बात है भाई। ठीक है। यहाँ तक कोई मसला बच्चों? एनी प्रॉब्लम सो फार?